सेबेस्टियन बुरा हो गया। सेबेस्टियन ने मेरे पे क्रूशियल कर्स यूज किया। ओ भाई व्हाट्स अप गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी। भाई बहुत ज्यादा ऑसम गेम है। अगर आपने मेरी इसकी सीरीज नहीं देखी तो ऊपर लिंक में मिल जाएगी। और भाई इस पार्ट में मैं जितने भी मेरे साइड क्वेस्ट हैं, मतलब इस पार्ट में नहीं, मतलब और भी मैं पार्ट बनाऊंगा। जितने भी साइड क्वेस्ट हैं सबका एक एक बनाऊंगा, जैसे इन द शैडो ऑफ द ब्लड लाइन और भाई द लॉस्ट चाइल्ड। इन सबके मैं अलग से शॉर्ट बना के डालूंगा, क्योंकि भाई मेन स्टोरी में मैं सोच रहा हूँ सिर्फ मेन टास्क करूँ, और जो साइड वाले जो ये सब हैं टास्क हैं इनको मैं अलग से कंप्लीट करूं और इनको मैं अपने हॉगवर्ट्स शॉर्ट्स में डाल दूंगा। वहां से आप जाके देख सकते हैं। मैं इनको आखिरी में डिस्क्रिप्शन में भी आखिरी में मतलब बॉक्स में भी डाल दूंगा, ऊपर लिंक भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं इसे। भाई लेकिन मेरे पास कम से कम मेरे हिसाब से 10 या फिर 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेस्ट हैं। 11 साइड क्वेस्ट है। मेरे को इनको कंप्लीट करना है। मैं इनको रफली शायद 12 एपिसोड या फिर मगर अगर छोटे छोटे में करूंगा तो 12 एपिसोड में करूंगा, वरना अगर एक एपिसोड में 2 हो गए तो इजीली मैं एक एपिसोड में 2 कंप्लीट कर दूंगा। इससे साइड क्वेस्ट भी मेरे हो जाएंगे कंप्लीट और मेन स्टोरी लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ अपनी साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने इन द शैडो ऑफ द ब्लड लाइन। भाई हमको मिलना है सेबेस्टियन से और ओमनियस से मिलना है। मेरे हिसाब से हॉगवर्ट्स के अंदर मिलना होगा मेरे को इससे। हॉगवर्ट्स मैप कहाँ? ओके वहाँ पे सेबेस्टियन और ओनिमस। ऑप्टिमस प्राइम, ये रहा ऑप्टिमस प्राइम। Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. ओके भाई ये मैंने मेन स्टोरी टास्क कंप्लीट किया था जब सलेजार स्लिदरिन के बारे में बता रहे थे। I won't give up. तो शायद ये वही टास्क है साइड वाला। What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Okay, dark arts are danger. I am curious about the dark arts. भाई ये पहले बोलते हैं dark art danger है, लेकिन मैं curious भी हूँ। The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. You can tell me. You do not have to tell me. भाई बताओ मेरे को, बताओ मेरे को जानना है। About it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? I am not. What is Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Oh भाई। It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting us on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. ओ भाई ओमिनस के पेरेंट्स ने उससे कहा कि ये कर्स तुम एक इंसान पे यूज करो। अगर उसने नहीं किया तो उसके पेरेंट्स ने उस पे यूज कर दिया। भाई ये कर्स। He had no choice. He should have known better. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay, सिर्फ मेरे को बात करनी थी क्या I'll इससे? make Ominous understand. He'll change his नहीं mind. मेरे को इसके आउल का वेट करना है कहीं पे जाना। ओ भाई एक मिनट को एक्टिव इधर आ जा तो मेरे पास। मेरे को यहाँ पे वेट करना है वैसे सेबेस्टियन का कॉमन रूम में। और यहाँ पे आ गया सेबेस्टियन। मेरे को बात करनी है। I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try.
But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Okay, मेरे को ominous से मिलने जाना है. In the shadow of the study. भाई स्लिदरिन के मैं कॉमन रूम में जाऊंगा. ओ भाई ये सही है यार. मैं अभी किसी और के कॉमन रूम में गया भी नहीं. ओ भाई ये कहाँ से आ गए? Although that hasn't stopped us before. ये कहाँ से आ गए? It has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. ठीक है भाई नीचे. चलो मैं ओमिनस से बात करता हूँ पहले. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Aren't you curious about what inside? I understand your caution. Oh भाई पहला वाला पूछना ज़्यादा अच्छा I'm रहेगा. sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Okay भाई अब सेबेस्टियन को लेके हमें आना है ओमिनस के पास. We don't regret ये क्या है? this. Sebastian, over here. Conferring courageous grant access to the scriptorium. Now you'll share? भाई मेरे को इसमें फायर यूज tell me करना when था. I कुछ practically करना था क्या? begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance Revelio. has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. ओ भाई It's सांप 2 की बात heads are कर रहे better हैं. than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. ओके मेरे हिसाब से मेरे को इसको भी लगाना है आग. इसको लगाना है और इसको लगाना है. ओ भाई अब ये दरवाजा खुलेगा. वही मैं सोच रहा था ये 3 चीजें दिखा क्यों रहा है यहाँ पे. ओ भाई 3 सांप और 3 हेड. मतलब 3 हेडेड स्नेक भी मिल सकता है भाई हमें इसके अंदर अभी. My favorite. No comment. Come on, that ओ was a भाई good लोमोस one. यूज करना चाहिए क्या मेरे को यहाँ पे. Revelio. ओ भाई मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पे रिपेरो यूज करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए. We may want to look around. रुको मैं एक बार रिपेरो यूज करता हूँ Channel यहाँ पे. पहले चेंज करता हूँ मैं. रिपेरो ये रहा रिपेरो स्पेल और रिपेरो. ओ भाई Formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. ओ भाई सांप की बातें. सांप की भाषा सर्पभाषी. The भाई voice is ओमिनस ancient. सांप की भाषा You सुन hear a सकता है. voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. ओ भाई मैं Nearly कह रहा all था ये known सर्पभाषी है. parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Second and third thoughts. Not at all. I see no reason we should stop now. It's ironic.
When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही औसम है यार. Wait to ominous to open the door. ओ भाई सर्वभाषी बोल रहा ominous. It worked. Ominous. You Oh, possess bhai. a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. There's no clear way ओ भाई एक forward. और सांप है भाई यहाँ पे. like a maze. Revelio. Salazar Slytherin most likely wanted this to be Bombarda. ओ भाई बम्बार्डा यूज कर दिया मैंने. It closed, Revelio. and there's more than one gate ahead. एक मिनट रुको, मेरे हिसाब से यहाँ पे आग लगानी पड़ेगी क्या? कि मेरे को इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से. कैसे सॉल्व करूँगा? That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. ओके मेरे को इस दरवाजे से मैच कराना है. भाई सांप ने मेरे पे अटैक कर दिया, झटका लग गया. मेरे को एक हाफ मून और फुल मून लाना है और नीचे वाले में सांप लाना है. ठीक है, यहाँ पे हाफ मून और फुल मून और यहाँ पे सांप ये लाना है. ओके वो मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ तो करना होगा इस सांप के Matching the साथ. symbols भाई लेकिन did बहुत open it. प्यारा लग रहा है यार ये Do that सांप. myself. आप You've got सही to में it बहुत first. प्यारा लग रहा है यार सांप मेरे को. मतलब जो बनाया है इन लोगों ने बहुत ही प्यारा बनाया है यार डिजाइन सांप का. क्योंकि यहाँ पे भी एक सांप है, एक माउंटेन है और एक रैबिट है उल्टा बना हुआ. मेरे को लग वो रैबिट ही रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, वो लग रैबिट ही रहा है. मैं वहीं में मिलता हूँ आपको, तेजी से जाता हूँ. तीनों साइड मैं गया हूँ I सॉल्व spotted करने. something ahead. ओ भाई Revelio. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. ओ भाई ये प्लेस और भी खतरनाक होता जा रहा है. I think we're locked यहाँ in. पे कर्स Again. क्या आ रहा है? Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. क्रिसिडियो लिख के आ रहा है भाई यहाँ पे. क्रिसिडियो मेरे को शायद कर्स मैजिक यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. फाइंड अ वे थ्रू. ओके मेरे को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा. वी लॉस्ट होप. आई एम लॉग इन. आई हर्ड अ स्क्रीम एंड सॉ द पे अनफॉरगिवेबल. Ominous. कर्स यूज करना पड़ेगा. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. ओ भाई मेरे को लग रहा है किसी पे मेरे को अनफॉरगिवेबल कर्स यूज करना You पड़ेगा. said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? ओ भाई मेरे को लग रहा था. आई राइडर यू आस्क हिम. You know him better than I do. Very well. Wish me luck. ओके भाई. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me ओ भाई better. ओमिनस गुस्सा आ गया है भाई यहाँ पे. Whoever you Lumos. cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. ओ भाई मेरे को फिर से सेबेस्टियन से बात करनी पड़ेगी. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Very well. I do not want to learn the Crucio spell. I want to learn the Crucio spell, but you must cast it on me. Teach me the Crucio curse, and I will cast it on you. भाई मेरे को ट्राई करना है, लेकिन भाई सेबेस्टियन को हम पहुंचाना उतना अच्छा नहीं है. मैं सीख लेता हूँ I want to सेबेस्टियन learn the को. curse, but I मेरे won't पे cast it अटैक on करने you. देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा. You need to cast it on me. I shan't forget this. ठीक है भाई, हम पे क्रूसियो कर्स यूज होने वाला है और हम लोग सीखने वाले भी हैं. ए वाई ए एक्स पी ए वाई ए ओ भाई एक्स ओ भाई पी, और ये सीख लिया भाई हमने. ओ भाई हमने कर्स मैजिक सीख लिया भाई एक. भाई अब मेरे पे I'm ready. स्पेल यूज होने वाला है.
सेबेस्टियन बुरा हो गया। सेबेस्टियन ने मेरे पे क्रूसियो कर्स यूज किया। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, दरवाजा खुला लग रहा है। ओ भाई, सेबेस्टियन बुरे हो गए तुम अब तो। ओ भाई, सेबेस्टियन बुरा बंदा है। सेबेस्टियन बुरा बंदा है, उसने मेरे पे क्रूसियो यूज किया। लेकिन भाई मैं भी सीख सकता हूँ। That pain, it was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. ओके, मैंने यहाँ पे हील कर लिया। मेरे को लगा मेरी लाइफ हील हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। भाई ये क्या है? ओके भाई, मैंने क्रूसियो स्पेल सीख लिया भाई। भाई मैं किसी पे ट्राई करके देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मेन स्टोरी लाइन कंप्लीट कर रहा हूँ। एक मिनट ट्राई करता हूँ, रुको। यहाँ से चेंज करता हूँ मैं। ओके, मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। ये बड़ा गंदी बात है यार। लेने का फायदा क्या हुआ? Sebastian, ominous. ओके, मेरे को स्पेल बुक मिल चुकी है। स्लिदर की मेरे को स्पेल बुक मिल चुकी है भाई। मैं बात करता हूँ सेबेस्टियन से। What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. Leave the Scriptorium भाई, मेरे को यहाँ से निकलना है अब। I owe you. Both of you. ठीक है, मैं यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा यार। अब इजिली ट्रैवल कर सकता हूँ यहाँ से भाई। इजिली बाहर निकल गया मैं। Best news I've heard all day. मैं अकेले ही बाहर आया। वो दोनों कहाँ हैं? About ये your रहे। aunt. Listen to what Ominous has to I say. meant what I said before. We swear, right now, never to engage in any dark magic again. Understood. Revelio. Truly sorry about your aunt, Ominous. ओ I भाई, suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. ओ भाई, हम लोगों ने कर स्पेल सीख लिया है भाई एक। ओके, मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रैवल भी कर सकता हूँ भाई। ये सही है यार। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया। सेबेस्टियन ने मेरे पे कर्स यूज किया, मेरे को मारने की कोशिश की। पता नहीं क्यों मारने की कोशिश की, वैसे मैंने ही कहा था। लेकिन भाई बहुत मजा आया। मेरे को एक कर्स स्पेल मिल चुका है। बहुत ही औसम था भाई ये पार्ट भी हम लोग का शॉर्ट वाला। मैं उसको छोटा करने, जितना छोटा कर सकता हूँ उससे छोटा करने की कोशिश करूंगा। Revelio. और भाई ये वाला बाथरूम तो नहीं है जहाँ से हरमाइनी, रॉन और वो हैरी पॉटर वो हिडन चेम्बर में एंटर करते थे। मेरे हिसाब से वही है यहाँ पे। लेकिन भाई मेरे को बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।